We'll talk about cognitive psychology. Cognitive psychology, and specifically, we are taking the class of this MAPC Subject 1 Cognitive Psychology. राइट, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें समझना है कि क्या होता है. व्हाट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी? फर्स्ट थिंग इज़ we have to, before anything, we have to understand what is cognition, because we are studying cognitive psychology. So what is cognition? So cognition की अगर हम बात करते हैं तो cognition is like a study of mental processes, you can say mental processes, right? तो mental processes हमारा क्या होता है? mental processes are like आपका थिंकिंग, कि कैसे हम लोग सोचते हैं, है ना. थिंकिंग, मेमोरी, एंड यू कैन से परसीविंग, यानी कैसे हम परसीव करते हैं एनीथिंग. सो दिस इज लाइक what we study in cognitive psychology. The question is why we study cognitive psychology. So there is reason. The reason is because we all know and want to know how our brain works, right? कैसे हम एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और एक सेंस बनाते हैं अपने आसपास की दुनिया का. बिकॉज जो हम सोचते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, कैसे हम दुनिया देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आती है यहाँ से. ठीक है, तो वो तो मेन रीज़न ये है क्योंकि वी नो दैट एवरीथिंग इज़ लाइक कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन एंड हाउ योर ब्रेन फंक्शन. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी स्टडी ह्यूमन बींग. अब एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं. राइट, वी हैव सेंस ऑर्गन्स, राइट, है ना. वी हैव लाइक सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स हमारे क्या हैं? अगर हम एक दो की बात करें तो आइज़, ईयर्स, स्किन, है ना. तो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. टच जो स्किन से रिलेटेड हो गया आपका, एंड स्मेल नोज से रिलेटेड हो गया, एंड देन आपका taste. So these are like 5 sense organs usually we will talk about. There are other also. So but these are the 5 main sense organs. So यहाँ से क्या होता है कि we collect information. What we collect information. हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, and that information goes into your brain, right? हमारी बॉडी ब्रेन में भेज देती है, एंड दैट ब्रेन प्रोसेसेस इट. क्या करता है? ये ब्रेन हमारा जो है वो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, एंड देन दिस ब्रेन सेंड दिस इंफॉर्मेशन अगेन बैक टू योर बॉडी, राइट. एंड वॉट एवर थिंग्स लाइक यू थिंक ऑफ एनीथिंग, कि आपने कुछ देखा, उसका मीनिंग लगाया. सपोज आपने किसी को देखा एंड यू थॉट ऑफ कि ही इज़ ए वेरी गुड पर्सन, और ही इज़ नॉट ए दैट मच गुड पर्सन, और यू रिमेंबर यू एंड यू मेमोराइज हिज और हर नेम or image of his like face, all those things. So that happens. So that is why we are interested in how we think, right? How we memorize, how we perceive or organize information. All those things becomes important. That is why it is important, right? So now like we'll again talk about कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, सो उसके बारे में थोड़ा सा और उसके कुछ एग्जांपल्स और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं. एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, बहुत ही कॉमन है. जैसे ये है, ये मैंने कुछ डॉट्स मैंने बना दिए, राइट. सो ये डॉट्स हमने बनाए, and these are the dots, right? So what you will perceive? Usually we perceive these dots as a triangle. Why we perceive triangle? Because these are the dots, but they are arranged in a certain pattern, but they are the dots, but we see as a triangle. So that is why how our brain
function is becomes like is the part of like study of, in cognitive psychology. Other thing is another example I will give you and I'll give you. So उसमें हमें ये देखना है कि कैसे काम करती है. सपोज कोई एक लाइक कार जा रही है ना, और ये एक्सीडेंट हो जाता है, किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्रैश हो जाता है. सो यूजुअली क्या होता है कि वहाँ पे सपोज 10 लोग खड़े हुए थे, है ना, यहाँ पे, और इन 10 लोगों से अगर पूछा जाता है, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस भी हैं, अगर पूछा जाता है तो क्या होगा, कोई ये बोलेगा कि कार बहुत तेज़ी से आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया, कार वाले की गलती थी. देयर विल बी पीपल हु सेज नहीं, कार तो बहुत स्लो थी, वो जो पर्सन जो था उसकी गलती थी, वो उसके सामने अचानक से आ गया, रोड क्रॉस कर दी, इसलिए हुआ. किसी से आप पूछोगे कार की स्पीड 100 के आसपास थी, कोई वो बताएगा नहीं नहीं नहीं, वो तो 50 के आसपास भी नहीं होगी. सो दीज काइंड ऑफ थिंग happens. So why they are happening? Because we all are seeing things and interpreting things in a different manner, right? So information हमारे पास, सबने वही एक्सीडेंट देखा है, but information is going to other different persons and they are interpreting in a different manner, right? And that becomes the part of like study of memory, and we call it, आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आई विटनेस टेस्टिमनी, कि देखा है फिर भी उसमें गड़बड़ होता है कि क्यों ये फ्लक्चुएशंस आते हैं. सभी लोगों ने एक ही इंसिडेंट देखा, बट दे आर इंटरप्रेटिंग इन ए डिफरेंट मैनर, राइट? So that is why there are a lot of implications of also that can be eyewitness testimony. If you may know that can be used in a court and in a our system of law. So these kind of things are there. So we study these things in our like cognitive psychology. Other thing is like how we can just like I am writing something, suppose cognitive psychology, I am writing it, and at the same time I am like talking to you people also, and I'm managing maybe something else also. So how we work in a different manner, or at one time we work on different things. So this is also a matter of cognitive psychology. So these are the things that we discuss when we talk about like cognitive psychology. So this is the field of the cognitive psychology. So before going in detail, we have to understand these things. So that is the crux, that is the thing that you have to understand. If you know that, then you know what cognitive psychology is, right? So so as per your cognitive psychology books that is given by the IGNO, we'll talk the next topic we will take like research methods in cognitive psychology. Okay, research methods in cognitive psychology. Before going in detail, first we have to understand कि research क्या होता है. Research is kind of where you can prove anything again and again. Suppose you have like taken hydrogen and oxygen, that you know that is H2O, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen, and that creates water, right? This is the formula for water. So every time in a given temperature in situation you will like mix these two things, there will be result, that is water. Similarly, research is like that. So how we think, how we perceive, but it becomes a bit difficult in psychology because it is not that much easy like any other science. So because there is a human being, and studying human being is a difficult task. So that is what research do. Now they know that when you will mix these two things, the water will come out, right? So so the first thing we'll talk about the goals of research, है ना. इस रिसर्च का गोल क्या होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में? इट इज दिस वाज इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि गोल
ऑफ रिसर्च क्या है इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी. सो almost similar, the process is similar, usually we follow in research. This is a very scientific process. So what we do is we collect data, yani we gather data. Data क्या करते हैं, like suppose you want to know how people think, so you may give something to remember those people, some words to remember, and then we'll like tell them to recall those things. So gather data. I'm giving some examples side by side so that you can understand, and that is one thing. Second thing is like data analysis. When you received that data, suppose now you have data where like 10 people you have given same words to them, and they recalled. So suppose you have given 10 words, so some may have recalled like 10, some 8, some are not able to recall 2-3 words only. So these kind of things maybe. So you got the data. And the theory development, third, that is again, these are the common things in all researches. So the third thing is theory development. Theory development means अगर theory development की बात करें, कोई डेटा आया, कुछ चीज़ें आई, and now you are sure कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. So just like H2O formula. So after doing something like memorizing, then you know that suppose 10% आया, उनमें से average जो आया 5 आया. So then you can say that only the average of 10 people is 5. So the chances are that people may remember only 5 things. So 50% of the information they remember, other things they forget it, right? So that kind of thing. Then theory development. Then other thing is, अगर हम बात करें fourth का, रिसर्च में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस मतलब हमने कुछ ऑब्जर्व किया अपने इन्वायरमेंट में, एंड देन वी मेड कि अगर हम बच्चों को या लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे तो इतनी ही रिटेन कर पाएंगे. दैट इज़ आवर हाइपोथेसिस. देन वी विल डू द रिसर्च, देन वी विल डू द सेम थिंग इन प्रैक्टिकली एंड ट्राई टू फाइंड आउट क्या जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी हाइपोथेसिस है. हाइपोथेसिस मतलब समथिंग दैट मे हैपन इन योर रिसर्च और मे नॉट हैपन इन योर रिसर्च. So that is right or not. So we test our hypothesis. So whatever hypothesis we formulate, that we test through data collection and all. That is hypothesis testing. And then when it is proved and everything, then we try to apply that knowledge. Apply that knowledge means, suppose we got to know that there are certain ways जिससे कि हम अपनी मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग 5 थिंग्स वी कैन रिमेंबर 8. सो दैट थिंग वी गॉट टू नो थ्रू आवर रिसर्च, राइट? सो वी कैन अप्लाई दोज थिंग्स इन रियल सेटिंग. रियल सेटिंग मीन्स अगर आप कहें तो क्या कर सकते हैं स्कूल्स में, क्योंकि स्कूल्स में हमें बच्चों को चीज़ें सिखानी होती हैं, एंड देयर आर अदर प्रोफेशंस, है ना, जहाँ पे एक्यूरेसी और रिमेंबरिंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी टीच देम और टेल देम दोज स्ट्रेटजीज और मेथड्स सो दैट दे कैन लर्न इन ए बेटर मैनर और उनकी इफ़िशियंसी को इंक्रीज किया जा सके. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट the goal of research, not only in clinical psychology, in other field and other psychology areas. So I think this is clear to you till now, and now we are going to specific methods that we use in cognitive psychology. सो डिस्टिंक्टिव मेथड्स उन्होंने नाम दिया है यहाँ पे. तो डिस्टिंक्टिव मेथड्स क्या हैं? डिस्टिंक्टिव मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या ऐसी, बिकॉज H2O की जब हम बात कर रहे थे, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, दैट इज़ दे आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स दैट वी नीड, बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ ए टोटली डिफरेंट थिंग्स. सो अब क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हैं विद केमिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू विद योर ह्यूमन्स, बिकॉज देर आर सम
restrictions also, and there are some things that is that cannot be done, like for example, though ethical things are involved in animal research also. So there are many things, there are many things that we do with like rats. We do many things, rats and pigeons. On those we do, my writing or drawing is very bad. So we do many research with rats and all, right? So what can I suppose we want to study the brain, so we dissect that or stimulate that or give some medication to them. So and then that can be done. But in case of human, you cannot do that. You cannot dissect the man, like living human being, or so there are a lot of ethical issues. So certain things you can do, certain things you cannot do. So so we'll talk about what kind of things we can do, or what is the different methods that we use in the like cognitive psychology and in general in psychology. ठीक है. सो डिस्टिंक्टिव रिसर्च में हमारा क्या आ जाता है, एक तो आता है कि देर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन डू इन लेबोरेटरी. वी कॉल इट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज एक्सपेरिमेंट्स. लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करते हैं ना. तो लैब एक्सपेरिमेंट वी कैन डू, और इनको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड. क्या बोलते हैं? कंट्रोल, बिकॉज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड इन द लैब, है ना. तो लैब एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल. सपोज जैसे मेमोरी वाला एग्जांपल हमने लिया था, तो इन दैट मेमोरी एग्जांपल, लाइक यू कैन कॉल पीपल इन द योर लैब and you can make them sit and you can ask them to remember certain things, and after some time you can tell them to recall it. So this is lab experiment. You can do it in your own lab. And similarly there are other things also, like rats and pigeons पे जो करते कुछ हम लोग करते हैं, जो experiments that can be done. But everything you cannot do in the lab. So what we can do or what cannot do, maybe in some other chapter we'll discuss when it comes to the research and all. So but lab experiment can be done, but not in all situation. Like if you want to, because you are studying human mind or human brain, so suppose you want to study the effect of crisis or natural calamities or any kind of loss in the family. So you cannot do that in a lab or in a real situation, but you can study whenever it happens, okay, how the brain works, or how the person responds to those things, right? So that can, so these are the limitations you can say with the experiments. Another type of research is psychobiological. साइको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन. बायोलॉजिकल साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, यानी आपके बायोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है आपकी साइकोलॉजी पे. सपोज देयर में बी सम इंक्रीज इन सर्टेन काइंड ऑफ लाइक हार्मोन्स, certain kind of hormones, or there is some biological changes in your body, or people have, like experimenter have like injected, like they have injected something in your body, so from outside. So these are the things that we study in psychology. Basically how your biology affects your psychology, your thinking and memory and language and everything, right? Like for example, from day to day life, suppose you have taken some alcohol or any other such kind of substance. So क्या होता है? If you have taken alcohol, so what happens is आपका जो सोचने समझने परसीव करने का तरीका है वो ऑल्टर्ड हो जाता है. वो all substances that you take, they basically these are like alcoholic things and all. So what they do is
आपके परसीव करने के, इसी वजह से क्या होता है एक्सीडेंट्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू जज कितनी दूरी पे कोई चीज़ चल रही है और हाउ टू वॉक, उनको लड़खड़ाना उनका शुरू हो जाता है, दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, सो क्या होगा कि उसको अफेक्ट कर दे। सिमिलरली देयर आर ड्रग्स जिनका इफेक्ट हम देख सकते हैं अपने साइकोलॉजी के ऊपर, सोचने समझने की क्षमता के ऊपर किस तरह से पड़ता है। तो that is psychobiological thing that can be done on, you can say, that can be done on humans as well as animals. I will not draw animal because I am not able to draw properly. So this is the second thing. So that is the second thing. And then next we are coming to self-report measures. Interesting thing, we use it very frequently. Self-report, case studies, and naturalistic observations, and हाँ, so these are, तो सेल्फ रिपोर्ट क्या है, आपको क्वेश्चंस दी गई, जैसे इस एग्जांपल में आपको बताता हूँ, लाइक whenever we have some kind of like election, so elections में क्या होता है, like जो surveyors होते हैं, they go and ask you कि tell me these are the 10 questions, who will win, who is the most favorable prime minister, all those kind of things, which party will win, all those things they ask. So when there is a questionnaire जहाँ पे questions हैं, question 1, question 2, question 3, and you are giving answers like ticking right or wrong, right or wrong, right or wrong, and these are the things, the self-report measures, जैसे inventories, questionnaires, these are the things we call it self-report measures, ठीक है, तो we call it self-report measures, है ना। Similarly case studies, so suppose you have found something like one case where suppose there is a child and that child has certain kind of rare disease, right, or rare situations, है ना, तो we study only one child in detail, what he is doing, how he is thinking, how his thinking has developed, everything about the child, or in research language we call it subject, right, so we call it subject। तो वह कैसे कैसे होता है, तो in detail when we study in certain people, and that is very important because if there is something rare, for example you have seen a movie called right, in like where Amitabh Bachchan played the role of child, जो बहुत तेज़ी से बड़ा होता है, बूढ़ा दिखने लगता है, so that is a rare problem, I don't remember the name of the disease, there are many things, these kind of things where things are rare, you cannot have much sample, much people like 10, 15, 20 or 1,000 people, you don't have, so in that case you take one case only, detail you study in detail, we call it case studies, so that also gives a very, very good observation। Then other thing is naturalistic, what is naturalistic observation, जैसे natural क्या होता है, you know that naturalistic observation, if there is a child or any adult, anyone can do that, I am taking the example of a child, ठीक है, and so अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या है कि वो बच्चा स्कूल के अंदर है, क्लास में बैठा हुआ है, सपोज देयर इज लाइक स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना, 30-40 वट एवर इट इज़, एंड देयर इज ए टीचर हु इज स्टडिंग हियर, है ना, एंड देयर इज ए प्रॉब्लम विद दिस वन गाय, बच्चे के साथ में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका साइकोलॉजिस्ट आता है एंड ही इज सिटिंग देयर और observing from a you can say a screen that is only one sided, means child cannot see but psychologist can observe the child, so the teacher is taking the class and writing something on board and all, and he or she is observing this child, है ना, तो this is a natural setting where the behavior is occurring
मतलब द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो भी बच्चे का है, दैट बिहेवियर इज अकरिंग देयर एंड साइकोलॉजिस्ट इज ऑब्जर्विंग देयर, दैट इज अनदर मेथड. तो दैट कैन बी डन, दैट इज वेरी यूजफुल बिकॉज, एंड द रीजन इज बिकॉज सपोज if you know कि someone is observing you, right, then your behavior may change. And when you don't know, you are naturalistically you are doing your own behavior, then it is fine. You will become more natural, and how you perform in a different situation naturally, that will come out. So that is why naturalistic observation becomes very important in these psychological studies, right? So that is one thing. Third thing, now we'll come to fourth point. Yeah, you can say I'm writing in numbers, so this is fourth point. Fourth point is computer simulation. Simulation आपको तो पता होगा क्या होता है. Simulation means कॉपी करना एक तरीके से. So and very interesting concept, very there is a lot of hype about AI, that is artificial intelligence. क्या है? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. तो अब हम कंप्यूटर सिमुलेशन भी कर सकते हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ भी हम लोग करते हैं. कंप्यूटर सिमुलेशन मीन्स सपोज like you know that when you put lot of data, you have lot of data about people or children और बच्चों से related बहुत सारा data आपके पास में है, and you put that data, suppose you have this like big data and you put it into the computer, and computer can analyze that data कि in 10 situation there are 10 situation, thousands of people they are behaving then, and you observe that thing, and then you put that in data in the computer in a certain program, and then you can analyze it, and computer can tell you कि in certain, and predict also कि in a certain situation how people will behave, right? So that kind of thing is called computer simulation. You are simulating that in environment things in the computer, that kind of thing. And then AI, artificial, and that is the same thing, like क्या कहते हैं, artificial intelligence क्या है? As you know, the best machine, if I ask you what is the best machine on the earth, that is human being, because how our eyes sees anything, right, that is the best. No camera can, till now there is no camera that can see like that, like all 3, 4, 5 dimensions, everything, depth, clarity, everything can be seen by eyes. So what does this camera do? Camera try to mimic that these eyes. Similarly, what computer does? Computer tries to become like your brain. That is what artificial intelligence is. So artificial intelligence के बारे में स्टडी यही होती है कि कैसे हम कंप्यूटर को ज़्यादा बेहतर बना सकें, जस्ट लाइक ह्यूमन माइंड, राइट. सो ये मेथड्स भी हम लोग यूज़ करते हैं. तो वॉट एवर वी हैव डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वी कैन यूज़ दैट थिंग और मेथड इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी. एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी दीज डेज इज़ अ वेरी गुड एरिया, जहाँ पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा है कि लोग कैसे सोचते हैं. अगर हमें ये पता लग जाता है लोग कैसे सोचते हैं, कैसे मेमोराइज करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, इमोशंस कैसे आते हैं, इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, we can make it possible that we can design our robot and computers like that. And we are doing the chatbot and all. They are the areas where they are implementing all those things. So these are the different kind of methods they use. So this is like a different kind of methods that can be used by, or that they are used by the cognitive psychologists. So ये चीज़ें हम लोग इस तरीके से स्टडी करते हैं, राइट. तो आई होप एक कॉन्सेप्ट जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो आपको समझ में आया होगा.
एंड इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे अलग क्लासेस, फर्दर क्लासेस में. इफ़ यू लाइक this class, you can comment in the box, and if you want some other clarification or videos on other topics, you can write it down in the comment box, and you can visit our website also for our courses and everything. Our website is www.uibsdel.in, and our number is 9354686038. So anytime you can write to it also. That is our email id, info@uibsdel.org, right? So thank you very much for watching the video. Any suggestion, comment is welcome. Please like and subscribe our channel to learn more about psychology. Thank you very much.